banking deregulation and unemployment in South Asia. Next slide, please. Move towards the introduction. Next. Okay, introduction. Actually, banking deregulation decreases the youth unemployment in South Asia. Actually, in this topic, we'll specifically talk about the South Asia's unemployment structure. Next slide. Okay, first of all, what is banking deregulation? Actually, it means the removal or elimination of government policies to increase the competition in the industry. And the impact of banking deregulation has not only on the financial sector, but also it has impact on investments. The controlled banking system actually increased the equilibrium employment because of the credit constraints. All right. And equilibrium employment is the level of unemployment in every country, and it should not be exceed. So ये level जो है ना unemployment का वो increase हो जाता है क्योंकि credit constraints लगाए जाते हैं in controlled banking system. अब जो banking deregulation system से ना अब increase करता है competition और efficiency increase होती है और इस efficiency system से investment increase होती है और जब investment increase होती है तो labor of demand जो है demand of labor वो increase करता है. अब demand of labor increase करेगी तो as a result unemployment decrease कर जाती है. That's all from my side. I would like to call Kurtalan to move forward. Assalamu alaikum. My name is Gurutulan Ali and my topic of presentation is benefits of deregulation. First we talk about what is deregulation. Deregulation क्या होता है? Deregulation ये होता है कि किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को खत्म कर दें और बिजनेसेस को अपनी पॉलिसीज खुद तय करने दें. यानी कि इसमें जो है कोई भी सेक्टर या कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अपनी पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद बनाती हैं. अब इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ डीरेगुलेशन पीछे इस साइड provide loans to entrepreneurs and business firms at low cost, reduces entry barriers for foreign banks, improve the supply of credit in foreign market. डीरेगुलेशन मार्केट के दरमियान कंपटीशन को इंक्रीज करता है. जाहिर सी बात है जब मतलब कंट्रीज जो है वो अपनी क्या कहते हैं उसको सेक्टर्स जो है वो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद बनाएंगे तो वो अपने प्रोडक्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकेंगे और अपनी इम्प्रूवमेंट को भी ज़्यादा कर देंगे तो फिर इससे जो है वो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. और कॉस्ट भी लो हो जाएगी. कॉस्ट लो होने का ये मतलब है कि जो जब हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो उसकी बैरियर जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी तो कॉस्ट भी लो हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई स्टडी साउथ एशिया कंट्रीज. दे इनिशिएट फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन. फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान फाइनेंशियल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इसका मेन पर्पस लोकल गवर्नमेंट को अपने एरिया के लिए रिसोर्सेज मिल सके फॉर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. ठीक है. उसके बाद हमारा आ जाता है पॉइंट प्रमोट प्राइवेट सेक्टर्स. ये प्राइवेट सेक्टर्स को भी प्रमोट करती हैं. इसमें जो है वो अपनी पॉलिसी, जाहिर सी बात है जब प्राइवेट सेक्टर्स अपनी पॉलिसीज खुद बनाएंगे तो वही बात आ गया कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो अपनी इम्प्रूव कर देंगे और इस तरह से उनको डीरेगुलेशन के जरिए से फायदा ही होगा. उसके बाद तीसरा है डेवलप मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को भी डेवलप करता है डीरेगुलेशन. इससे भी उनको फायदा होता है क्योंकि वो बहुत सारे बेनिफिट्स और सर्विसेज जैसे कि लोन्स प्रोवाइड करता है कम इंटरेस्ट पे. उसके बाद आता है ओपनिंग देयर बॉर्डर फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. इसमें जो है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. किसी भी कंट्री के साथ आप कर सकते हैं.
नेक्स्ट है ग्रो द स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट को भी ग्रो करते हैं। डीरेगुलेशन के जरिए से स्टॉक मार्केट में ग्रोथ को पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल बढ़ जाता है। प्रोमोटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद ईच अदर, डीरेगुलेशन के थ्रू कंट्रीज को आपस में ट्रेड एंड प्रोमोट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी बेटर बनाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyida Fatma Abbas. Today I'm here to present you the following topic: financial reforms in South Asia. First, we will see what is financial reforms. Okay, the financial reforms refers to the changes or regulations implemented in the financial sector with the aim of improving its stability, efficiency, transparency, and overall functioning. These reforms are typically undertaken by governments, central banks, and regulatory bodies to address specific issues or weaknesses in the financial system. Next slide. Moving towards the initiation period. In initiation period of Bangladesh, the objectives of financial reforms in Bangladesh has been going for several years, and they aim to strengthen the country's financial sector, promote economic growth, enhance financial inclusion, and ensure stability. Okay, and what were the objectives behind the financial reforms of Bangladesh? The objectives of financial reforms in Bangladesh can vary depending on the specific context and time period. Here are some common objectives of financial reforms in Bangladesh, which include enhancing stability, financial stability. Financial reforms aims to strengthen the stability and resilience of the financial system in Bangladesh. Next is promoting financial inclusion. Its main objective is to promote financial inclusion, which means providing access to financial services such as banking, insurance, and credit, and to all segments of the population, especially under diverse and unbanked. Third is strengthening regulatory and supervisory frameworks. Financial reforms aim to enhance the regulatory and supervisory frameworks governing the financial sector in Bangladesh. Next slide. Fourth one is encouraging private sector development. Financial reforms seek to foster a conducive environment for private sector development in Bangladesh. Fifth one is financial reforms aim to develop and deepen the capital markets in Bangladesh. Sixth is financial reforms aim to enhance the financial sector infrastructure in Bangladesh. Last but not least, literacy and consumer protection. Financial reform seeks to improve financial literacy among the general population and enhance consumer protection measures. That's all from my side. Now, next member will proceed further. Thank you. Next slide. Assalamu alaikum. I am Mariam Fatma. I am going to tell you about financial reforms in Pakistan. Basically, the main purpose of financial reform in Pakistan is to maintain the sustainability of the banking system. Okay, let me tell you when financial reforms initiated in Pakistan. Financial reforms started in 1988 and completed in three different phases. As you know, the time of banking crisis when Pakistan faced major crises and it led to major destruction. In 1988 to 1996, 1997 to 2001, and 2002 to 2004. Then after the crisis, some objectives were made to attain the sustainability and control the crisis. First objective was privatization of commercial bank. Privatization means selling of government assets without transferring ownership. Removal of entry restriction of private bank. In banking sector, there were restrictions on the entry system. Then removing the restriction is the second objective. Introduction of subsidized credit scheme. Subsidized credit scheme is giving loans to undergraduate students, giving short-term loans. Elimination of credit ceiling system. Now, what is credit ceiling system? Credit ceiling system is limitation on the amount of credit.
We have to remove these restrictions and give unlimited credit. Lowering of legal requirements for banks. There were too many legal restrictions on banks. The objective of attaining sustainability is to maintain these requirements. Next slide. Now, what were the results of these objectives? Financial discipline and stability have been established in Pakistan. As you can see that to a great extent, Pakistan is not financially stable, but the objectives were accomplished. Microfinancial system have been developed in Pakistan. There were not major banking system in Pakistan. After these objectives, a great banking system is established. That's all from my side. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Myself Zainab Saeed, and my topic of presentation is unemployment in South Asia. Next slide. Basically, South Asia consists of the four major countries in the world. They are India, Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh. Usually, 1/5 of the world population lives there. There are many factors that cause the unemployment in South Asia. Some of them are inadequate education and training, limited entrepreneurship, mismatched labor supply and demand, lasting impact of the Great Recession, and high demand for trade unions. Basically, it is high in Pakistan due to the 9/11 incident that happened in early 2000s. The 9/11 incident caused the unemployment rate to be increased by 0.11%. However, there are many factors that help in reducing unemployment. The first one is the stable economic growth. Unemployment is highly dependent on economic activity. So when the economic activity is high, more production happens overall and more people are needed to produce the higher amount of goods and services. The second one is the trade liberalization. Basically, trade creates jobs. So exports can increase income, for example, by expanding demand, achieving high returns, and bringing production closer to full capacity. And the last one is the financial reforms. When it's easier to borrow money, people spend more money and invest more. So this increases aggregate demand and GDP and decreases the cyclical unemployment. That's all from my side. Thank you. Assalamu alaikum all of you. My name is Hafsa Farooq and I would like to conclude this whole discussion about banking deregulation. As we have knew that the banking deregulation reduces entry barriers for foreign banks, and these foreign banks improve the supply of credit in the foreign market, and thus our consumer have more choices at low cost. Then we also have studied that we are discussing all these banking deregulations in South Asian countries. So major reason for choosing the South Asian countries is that there have already been so much research in US and in other European countries, but very little research in these South Asian countries. And also these countries is lead toward the fiscal decentralization, and they promote their private sector. So studying about the decentralization about here is now a necessary thing. They also open their borders for foreign banks, trades, and investment, and shift from import substitution policies to export-led growth. So so far we have we come to the conclusion that banking deregulation reduces overall and especially youth unemployment rate in these Asian countries. If we reduce the competition restriction and high consumption expenditures and bank credits, high per capita income and agricultural growth is obviously a major reason for reducing the unemployment in these countries. These are the some conclusions, but there are some suggestions that these countries should need to adopt for further growth and further reducing the unemployment in their countries. Number one is relaxing foreign banks. Such countries should relax foreign banks so that they provide foreign capital banking technology and new financial instruments, which would be obviously beneficiary for the country for the particular country. And next is increasing competition. Increasing competition always bring efficiency, and this efficient environment create more jobs and more quality products. By increasing the competition, the efficiency would increase automatically.
And the last one is reduce credit controls. Uh, Reduce the credit control and provide more capital to the private sector. Like we do not have to centralize the banking system. It should depend on the market, and market interest rate should be decided by the market. So the system could work efficiently. So these are all discussions from our group. If there is any questions, then you can may ask. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। मैम स्टार्ट कर दें हम। मैम स्टार्ट कर दें हम। हेलो। हाँ जी, स्टार्ट करें। प्लीज स्टार्ट करें जाबिर। Okay. Assalamu alaikum everyone. My name is Jabir Sen and today I am discussing the topic that is advantages and disadvantages of investment banking. My group member are Arsalan, Noor, Hamid Iqbal and Muhammad Dawood. So let's start with the advantages of investment banking. The first advantage आपकी आवाज नहीं आ रही। जाबिर आवाज नहीं आ रही आपकी।
हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? आप आ रही है। जी आ रही है, स्टार्ट कर। चलो ओके ओके, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आवाज नहीं आ रही। Assalamu alaikum everyone. My name is Jabir Hussain and today my topic is advantages and disadvantages of investment banking. My group member are Arsalan, Noor, Hamid, Iqbal and Mohammad Dawood. अभी आवाज आ रही है मेरी? सही है, क्लियर है? हेलो, जी आवाज सही आ क्लियर? सही है सही। So the first advantage is capital raising. Investment bank help companies raise capital through various means such as initial public offering and private placement. इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को हेल्प करती है आईपीओज में एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में। दिस अनेबल बिजनेस टू एक्सेस फंडिंग फॉर एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी वो फंड जो इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को देती है वो उसको यूज करती है एक्सपेंशन में, रिसर्च में और कंपनी डेवलपमेंट में उस फंड को वो यूज करती है। तो इस तरह मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक कैपिटल रेजिंग में हेल्प करती है कंपनीज की। दूसरा जो हमारे पास एडवांटेज है वो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस। इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस टू कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज। चूंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ जो एक्सपर्ट होते हैं वो मतलब उनका एक्सपीरियंस होता है इन मार्केट में, तो वो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस में हेल्प करती है। मतलब कंपनी अगर कोई कहती है कि हम मतलब मर्जर्स एक्विजिशन मतलब मर्ज होना चाहते हैं, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक से राय लेती है मतलब किस हमें मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो वो उसको एडवाइस देती है कि मतलब अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको मतलब वो एडवाइस देती है कि आप लोग मतलब मर्ज हो जाए तो आपकी कंपनी जो है मतलब बच जाएगी। तो इस तरह एडवाइजरी सर्विस में भी फाइनेंस जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो हेल्प करती है। थर्ड नंबर पे आते हैं मार्केट लिक्विडिटी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट द बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट, enhancing market liquidity. This allows investor to efficiently trade and allocate capital, improving the overall functioning of the economy. लिक्विडिटी होता है मतलब किस हद मतलब किस इजीली हाउ इजीली मतलब हमारे जो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ आवर स्टॉक किस तरह होती है, मतलब कितनी इजीली हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो फैसिलिटेट करती हैं बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी में हेल्प करती है और जिससे मतलब इनहेंस होती है मार्केट लिक्विडिटी। दिस अलाउ इन्वेस्टर टू एफिशिएंटली ट्रेड एंड एलोकेट कैपिटल। ये मतलब इन्वेस्टर को हेल्प करती है कि वो इजीली एलोकेट करे और ट्रेड करे कैपिटल को, इंप्रूविंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। और इस तरह मतलब इकोनॉमी की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ अरसलान नूर विल प्रोसीड फर्दर। Assalamu alaikum. Myself Aslan Noor, and today I will present the further advantages. So next one is risk management. Investment banks offer risk management solutions, including hedging strategies and derivatives products. These help clients mitigate financial risk such as interest rate fluctuations, currency volatility, and commodity risk price. जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है वो रिस्क को किस तरह मैनेज करते हैं, इसके लिए दो सोल्यूशन इन्होंने बताए हुए हैं। एक बताया हुआ है हेजिंग स्ट्रेटजी और दूसरे होते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। हेजिंग स्ट्रेटजीज होती क्या है? हेजिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली टेक्निक्स होती हैं जो भी किसी भी फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको जो रिस्क होते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए यूज की जाती हैं। ये स्ट्रेटजीज क्या करती हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्स कर देती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे फाइनेंशियल जो मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क को किस तरह, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस को किस तरह कम करती है। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस जब भी कोई कंपनी होती है उसका वेरिएबल डेब्ट रेट होगा, तो वो इसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो स्वैप पे चला जाएगा। इसमें जो होता है वो आपका वेरिएबल जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट में चला जाता है। इसी तरह जो करेंसी रिस्क होता है, करेंसी रिस्क को क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस होती हैं करेंसी में, तो इसकी वजह से ये होता है कि आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है किसी भी कंपनी की उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको इस रिस्क को खत्म करने के लिए जो कंपनीज होती हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की चले जाते हैं, वो ऑप्शंस वगैरह पे चले जाती हैं। इसी तरह कमोडिटी प्राइस है। कमोडिटी प्राइस होती हैं जब भी कोई फ्लक्चुएशंस वगैरह होती हैं तो कमोडिटी प्राइस में भी अप एंड डाउन आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंपनीज होती हैं वो हेजिंग टेक्निक को यूज करते हुए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चली जाती हैं। तो second one advantage is job creation and economic growth. Investment banking activities contribute to the job creation both directly within the industry and indirectly through supporting the business.
The growth and expansion of companies facilitated by investment banks stimulate economic activity and promote overall economic growth. इसमें यह बताता है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन में किस तरह हेल्प करता है। तो इसमें जो जॉब क्रिएशन में सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन करती है। इसमें ये कहता है कि जो लेट्स सपोज कोई भी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उसमें ये होता है कि आप आईपीओ इशू कर देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाते हैं, आप बॉन्ड्स वगैरह दे देते हो, आप लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो इससे जॉब क्रिएशन भी होती है और इकोनॉमी की होती है। कोई भी बिजनेस जो होता है वो स्टार्ट कर सकता है, कोई इनिशिएटिव ले सकता है। मर्जर एंड एक्विजिशंस भी इसी में आते हैं। इसमें ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो जो 2 या 3 जो होते हैं कंपनीज होती हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, ताकि वो एक तरह से स्टेबल करने के लिए 2-3 कंपनी जो होती है, छोटी कंपनी मिलकर एक बड़ी कंपनी बना लेती हैं। इससे इकोनॉमी भी ग्रो होती है और जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। So third one is innovation and research. Investment banks employ highly skilled professionals who conduct extensive research and develop innovative financial products. This fosters financial innovation, improves market efficiency, and derives technical advancement in the financial sector. सो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वो इकोनॉमी में इस तरह भी हेल्प करती है कि वो इनोवेशंस और रिसर्च करती है। इसमें ये होते हैं कि वो कुछ एडवाइजरी जो फैसिलिटीज होती हैं, इसमें इंडस्ट्री इनसाइट्स को देखते हुए मार्केट रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, कोई भी वो मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं और रिसर्च पे करते हैं उस पर कि आने वाली जो टाइम है उसमें किस चीज में इन्वेस्टमेंट की जाए, इस ताकि आपका जो रिस्क हो उसको कम से कम किया जा सके। That was all from my side. Now further will be explained by Hamid, Iqbal and Dawood. Assalamu alaikum class. My name is Muhammad Dawood and today I'm here to present the discuss the disadvantages of investment banking. जिस तरह जाबिर और सनान ने एडवांटेजेस के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज है सोसाइटी के लिए, वो है इनकम इनइक्वालिटी। लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफन बेनिफिट हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड लार्ज कॉर्पोरेशन, पोटेंशियली एक्सरबेटिंग इनकम एंड इनइक्वालिटी विद इन सोसाइटी। मोस्टली ऐसा होता है कि जो जिसकी नेटवर्क ज्यादा होती है, जो कॉर्पोरेशन जिसकी हम कहें कि नेटवर्क ज्यादा है या उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हाई है किसी सोसाइटी में, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो सर्विसेज ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर फिर देखा जाए तो सोसाइटी में इनकम की इनइक्वालिटी पैदा होती, तो ये एक बेसिक डिसएडवांटेज है हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। फिर नेक्स्ट आते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। Investment banking, particularly those deemed too big to fail, can pose systematic risk to the financial system. Their interconnectedness, complex financial products, and leverage can lead to the market instability and their need for the government and intervention during the time of crisis. क्योंकि जो एक्टिविटीज होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, वो तमाम फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिसकी वजह से एक रिस्क इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाए ना, तो इससे फिर पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं उसमें रिस्क पैदा होते हैं, उसमें इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन दे simultaneously act as an underwriter, financial advisor and trader. These conflicts can compromise the objectivity of their advice and undermine the best interest of their clients. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी हायर कर लेता है कि एक फाइनेंशियल एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर कर लेती है और उनके लिए कैपिटल राइज का काम करते हैं। लेकिन अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है ना वो एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करे जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट को बजाय उसकी क्लाइंट को, तो इसी दौरान में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होते हैं जो कि एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। सो ये मेरी तरफ से ना फर्दर जो है ना वो हामिद इकबाल प्रोसीड करेगा। हामिद इकबाल प्लीज।
हामिद, स्लाइड ओपन करें। Assalamu alaikum. My name is Hamid Iqbal. Today my presentation is about disadvantages of investment banking. So first one is the regulatory changes. The regulatory changes, the complex nature of investment banking activities poses challenges for regulators in terms of monitoring and oversight. जिस तरह हमें पता है जो इन्वेस्टमेंट बैंक है तो उनके लिए रूल और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब किसी कंट्री में लॉ चेंजेस होते हैं तो वो उन पे बहुत इफेक्ट करते हैं। जिस तरह के आ जाती है हमारे पास टैरिफ्स और ट्रेड पॉलिसी होती है, उनके साथ उनके चेंज के साथ भी उन पर बहुत इफेक्ट होता है। एंड innovative financial product required effect regulation to maintain market integrity and stability. फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जिस तरह के न्यू चेंजेस आती है तो उसकी जो इनोवेशन होती है उसके साथ साथ उनके लिए रूल और रेगुलेशन भी चेंज होते रहते हैं। और नेक्स्ट वन इज रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क जिस तरह investment banks are susceptible to reputation risk due to their involvement in controversial activities or high-profile scandals. These incidents can damage public trust and confidence in the financial industry as a whole. जिस तरह की रेपुटेशन वो कोई कंपनी वो जो डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, एक कंपनी जिसकी रेपुटेशन अगर अच्छी नहीं हो तो उसकी वजह से उस पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। And another one is volatility and cyclical nature. Volatility or cyclical nature, investment banking revenue are subjected to market fluctuation and can be cyclical in nature. During periods of economic downturn, investment banking activities may decline, leading to job cuts and reduced profitability. जिस तरह की प्राइस में फ्लक्चुएट होती है, डॉलर की प्राइस भी चेंज होती है, प्राइस चेंजेस और डॉलर की कीमत अगर चेंज हो तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो दैट्स नॉट फ्रॉम माय साइड। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। रब्बिक शराह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. I am Aliza and I am here. I along with my group members Hajra Aman, Shakil and Rabil are here to present the topic that is financial intermediaries. Financial intermediaries are basically refer to the third party that is forming an environment for conducting the financial transaction between different parties. For example, bank accept the deposit from a customer who have excess of money and lend it to the customer who are in the need of that money. इसमें हम लोगों के पास बेसिकली ये होता है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और जो दो पार्टीज ट्रांजैक्शन कर रही होती हैं वो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं कर रही होती बल्कि एक थर्ड पार्टी के थ्रू कर रही होती हैं। फिर हम लोगों के पास इसमें आ जाता है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो एक थर्ड पार्टी हैं जो कि लेंडर और बोरोअर्स को कनेक्ट करती हैं आपस में। They significantly manage the financial assets and financial liabilities to prevent the financial crisis. इसमें जो बैंक होता है या जो भी इंटरमीडिएरीज थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो वो क्या करती है कि फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को जो है वो मैनेज कर रही होती है और उसकी वजह से हम लोगों के पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के चांसेस कैसे मिनिमाइज होते हैं कि वो एक रेगुलेटरी पॉलिसी उनके पास होती है जो कि उसके थ्रू वो लोग अपना प्रोसेस जो है वो काम कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों के पास आ जाता है रोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। फिर रोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में हम लोगों के पास है कि ये क्या करती है कि कनेक्ट करती है टू पार्टीज को हु हैव सरप्लस ऑफ फंड्स विद द पार्टी हु इज इन द नीड ऑफ इट।
टू पार्टीज को कनेक्ट करती है। एक वो पार्टी जिसको फंड की ज़रूरत होती है और दूसरी वो जिसके पास एक्सेस ऑफ फंड होती है। फिर फ्रॉम दिस फ्लो उसकी वजह से हम लोगों के पास इकॉनमी में मनी जो है वो इजीली फ्लो होता है और इकॉनमिक ग्रोथ भी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर हम लोगों के पास दूसरा जो इसकी रोल है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड the service they provide and the role and the complexity change with the services they provide, like अगर वो लोग लोन दे रहे हैं, मॉर्गेजेस दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और या तो इंश्योरेंस करें, वो इन सब में इनका जो रोल है वो चेंज हो जाता है। नाउ हाजरा मान विल फर्दर प्रोसीड। हेलो अलीजा, इससे पिछली स्लाइड भी है नहीं जिसमें फाइनेंशियल, हाँ ये रोल भी है ना इसका रोल। हाँ रोल मेरे थे हाजरा, इससे पिछली स्लाइड ये वाली हाजरा स्टार्ट करो ना। Okay. Assalamu alaikum. My name is Hajra Aman. So today I am here to present the lecture that is related to financial intermediary. Financial intermediary function basically by connecting an entity with a surplus fund to a deficit fund based on the type of services and product offered by the intermediaries. The complexity in their role changes they take the from फाइनेंशियल इंटरमीडिएट बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि ये कंपनी की हेल्प करती है और एज अ बैकबोन ऑफ अ कंट्री काम करती है, क्योंकि ये इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये लेंडर और बॉरोवर के दरमियान स्टेबल पोजीशन क्रिएट करती है। जिसको पैसा चाहिए उसको देगा और जिसको सेव करना है उससे लेना है, दोनों स्टेबल रख के मुल्क में बैलेंस क्रिएट करती है। और जो इनकी वजह से जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी बेसिकली होती है। अब इसके फेसेस डिफरेंट हैं इन पाकिस्तान। ये जो डिफरेंट फेसेस इसके फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, ये सारे इंटरमीडिएशन का काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का इनके फेसेस डिफरेंट है, लेकिन इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये बोरो और लैंड करते हैं। हर केस में इनको बोरो से ये पैसे लेते हैं और लोगों को जिनको जरूरत है उनको देते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस रोल आगे नेक्स्ट स्लाइड। लिंक हाउसहोल्ड्स टू द फाइनेंशियल मार्केट। इनका जो रोल है वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट के साथ लिंक करते हैं। हाउसहोल्ड मतलब पैसे देते हैं और इनको इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और दूसरा स्लाइड दूसरा इनका रोल ये है कि दे सेव गार्ड कस्टमर्स। ये कस्टमर्स को बचाते हैं। जैसे पैसे जो बैंक में हम ज्यादा अमाउंट बैंक में अगर सेव करते हैं तो बैंक हमारे पास क्या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है। और फिर तीसरा क्या रिड्यूस द कॉस्ट बिजनेस बाय ऑफरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये कैसे प्रोवाइड करते हैं कि आपने कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप डिफरेंट लेंडर देखते हैं, आपके पास ब्रोकर भी डिफरेंट होते हैं। तो ये काम आपने आप जाके आप ये काम आपको आपके लिए मुश्किल होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सी सेफ साइड है, हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हमारे लिए ये काम इजी कर लेता है। और फिर उसके बाद था इट हेल्प कॉर्पोरेशन ऑप्टिमाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास आप डेट और इक्विटी का रेशो होता है जो जिसको बैलेंस करता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। फिर स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे आपकी कंपनी और इकोनॉमी दोनों ग्रो होगी और स्टेबल होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Assalamu alaikum. My name is Hafizadi Sharabil. Thank you for having me here. मेरा टॉपिक है सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स ये होते हैं कि ये डिपॉजिटर और अपनी रिसोर्सेज के थ्रू डिपॉजिटर और क्रिएटिंग क्रेडिट के दरमियान में एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके फंक्शंस में इंक्लूड होता है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस होती है कि ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये लोगों को डिपॉजिट लोगों से लेकर फिर उसके बाद जिन लोगों को ज़रूरत होती है पैसों की, वो उनको क्रेडिट क्रिएशन में कन्वर्ट करके और उनको क्रेडिट उनको दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है कि ये फैसिलिटेट करती है लार्ज कंपनीज को। जैसे लार्ज कंपनी के शेयर्स होते हैं वो मार्केट में जब वो सेल करते हैं, अब एक बंदा अपने शेयर सोल्ड कर रहा है और दूसरा बंदा जो है उसने मार्केट से वो शेयर अपनी कंपनी के लिए खरीदेगा, तो बीच में इनके इंटरमीडिएरी कौन होगी? स्टॉक एक्सचेंज होंगे कि लोग उनसे स्टॉक्स को एक्सचेंज करेंगे और उनसे मार्केट में एक जाएगा बोरो करने के लिए, दूसरा लेंड करने के लिए, तो वो एज अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से वो जाकर अपने शेयर लेंगे। फिर आता है हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज। जैसे हुए तो इंश्योरेंस कंपनीज में ये प्रोवाइडिंग करती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम पॉसिबल हैजर्ड्स इन द फ्यूचर। इसमें हमारे पास लेट्स एग्जांपल जैसे जुबली इंश्योरेंस कंपनी है, ये रिसेंटली इसने अपनी एक न्यू स्कीम लॉन्च की है कि इन विच दे आर गोइंग टू पे 1 lakh per year for 7 years and after 20 years they will provide 70% of profit to their customers। तो इसमें हमारे पास जो होगा कि अगर आप आज जॉब पर हैं, आप आज पे कर सकते हैं, तो कल को फाइनेंशियल फ्यूचर में आप फाइनेंशियली किसी भी हैजर्ड से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उसके में आपके पास ये कंपनी प्रॉफिट देगी। फिर हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर वर्क इन इंटरमीडिएरीज। सबसे ज़्यादा इनका सबसे मेन और मेजर इंटरमीडिएरीज में इनका काम होता है। ये कॉर्पोरेशंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के दरमियान में एक इंटरमीडिएरी का काम करती हैं। कॉर्पोरेशंस को ये इशू करती हैं शेयर ऑफ स्टॉक एडिशनल स्टॉक में, और ये जो डेप्ट फाइनेंसिंग होती है उनको भी ये साथ कॉर्पोरेशन के अरेंज करती हैं और लार्ज स्केल पर फाइंड करती हैं इन्वेस्टमेंट को, ताकि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को अचीव कर सकें। फिर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी। ये नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं दैट डज नॉट हैव अ फुल बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास ना बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, ना ये सुपरवाइज्ड होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी से। ये अपने ऑन पर ही एज अ प्राइवेट काम कर रहे होते हैं। ये अगर आप इनसे पैसे इनको दे रहे हैं तो वो अपने ऑन रिस्क पर देंगे। अगर आपको कल को लॉस हो जाएगा तो उसमें ना तो कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसा इदारा इन्वॉल्व हो सकता है, ना वो इनके ऊपर आप केस भी नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्थ नहीं रखती। फिर एस्क्रो कंपनीज हैं। एस्क्रो कंपनी एक न्यूट्रल पार्टी होती है जो मनी की जो वैल्यूज को होल्ड करके रखती है, इंश्योर करती है बायर और सेलर के दरमियान में कि ट्रांजेक्शन ऑब्लिगेशन इनकी ट्रांजैक्शन ऑब्लिगेशंस हैं कि नहीं है। जब तक वो प्रॉपरली लीगली उनकी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकेंगी तब तक वो ना तो लेंडर और बाय के दरमियान में जो लीगल डॉक्यूमेंट्री होती है उसको नहीं श्योर करती। बैंक्स आते हैं। बैंक्स से लैंडिंग एंड बॉर्डरिंग करते हैं। ये तो सिंप्लीफाई, सबको पता है कि ये लैंडिंग एंड बॉर्डरिंग मंडी सिंप्लीफाई करती है एक दूसरे लोगों के दरमियान में। अभी उसके बाद हमारे पास आता है पेंशन फंड। पेंशन फंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज वो लोग पेंशन शुदा लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट उनको पेंशन एज अ फंड देती है। अब उसमें उनके दरमियान में वो डायरेक्ट गवर्नमेंट उनको फंड नहीं देगी, बल्कि उसके दरमियान में या तो ये बैंक्स हैं या पोस्ट ऑफिसेज हैं और इसी तरह के कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि गवर्नमेंट से वो फंड इनको देते हैं और आगे से जो लोग होते हैं वो इंस्टीट्यूट से उस ऑर्गेनाइजेशन जाकर अपने फंड को देते हैं। फिर हमारे पास है बिल्डिंग सोसाइटीज। बिल्डिंग सोसाइटी लाइक एंड ये प्रॉपर्टी डीलर का काम कर, जैसे प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं उसी तरह काम करती हैं कि आप डायरेक्ट किसी बंदे से जाकर अगर आपको किसी को कोई घर लेना है, कोई प्लॉट लेना है, आप उसके पास किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में जा रहे हैं, आप उनके पास जाएंगे, उनको जाकर बोलेंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए इतने की, तो वो आपको दूसरे लोग जो उनको सेल करने के लिए आएंगे वो डायरेक्ट लिंक नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है। तो ये बिल्डिंग सोसाइटीज जो है ये हमें एक दूसरे से मिलवाती हैं और आगे फर्दर हमारा प्रोसीजर होता है, हम उनसे अपनी प्रॉपर्टी को लेते हैं। और क्रेडिट यूनियंस कौन से होते हैं? क्रेडिट यूनियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन बाय आइदर मेंबर्स होते हैं स्टॉक होल्डर्स के, ऐसे इदारे जो कि कभी स्टॉक होल्डर की बजाय उनके ऐसे लोगों की मालिकियत में आते हैं क्योंकि जो क्रेडिट यूनियन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ इफ्रा विल एक्सप्लेन फर्दर।
Assalamu alaikum. I am here to wrap the presentation. Aliza, next slide करो. So my topic is saving और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में हम लोग सेविंग को यूज कर सकते हैं. मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखती हूँ कि अगर आप कोई जो मनी है उसको आप सेव करना चाहते हैं तो हम लोग पहले जो हमारे फैमिलीज वाले होते थे वो ये करते होते थे कि वो घर में ही उसको सेव कर देते थे मनी को ताकि उनकी जो मनी है वो सेव हो जाए. लेकिन जैसे जैसे हुआ इंक्रीज हुई मॉडर्न सोसाइटीज में तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तरफ किया अपना कंसिडरेशन. तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट शुरू हुई तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई तो लोगों ने उस उधर अपनी जो सेविंग्स थी उसको करना शुरू कर दिया. तो अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो हमारी जो सेविंग होती है उसके रिस्क को मिनिमाइज करते हैं. जैसे हम लोग पर कहते हैं सेविंग्स आर ट्रांसफर्ड इनटू इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी वाया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स एंड बैंक्स. अब ब्रोकर्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में हमारे साथ एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं. वो लोग क्या कहते हैं थर्ड पार्टी करके हमारी जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो रिस्क अवर्सर्स होते हैं वो बेसिकली बैंक को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बैंक जो होता है वो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैंक जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उन्हीं से हम लोन भी ले सकते हैं. तो बहुत ज्यादा चीजें हम एक ही जगह में जाके करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है. फिर जो होता है हमारे पास जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो हमारी अमाउंट और टाइम और को भी सेव करते हैं क्योंकि जो इंटरमीडियरीज होते हैं जो ज़्यादातर बैंक्स जो होते हैं वो ऐसे करते हैं कि वो आपकी जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज करने के साथ साथ जो आपकी अमाउंट होती है जितनी अमाउंट होती है उसके ही रेलेवेंट आपको इन्वेस्टमेंट बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो सेवर होता है उसकी जितनी अमाउंट होती है उससे उसको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है और उसमें वो कोई क्या कहते हैं स्कैम भी नहीं होता. फिर उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कंडक्ट स्पेशल. अच्छा अब जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं ना वो पूरा आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना रिस्क है, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, आपको कितने अरसे बाद आपकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी. तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी सेवर के लिए कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को इन्वॉल्व करे अपनी इन्वेस्टमेंट में ताकि जो उसके जितने भी रिस्क वगैरह हैं उससे उससे वो रिड्यूस हो सके. तो उसके बाद ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी काम करती है. और नेक्स्ट स्लाइड करना. अब यहाँ पे ना हमने स्ट्रक्चर बताया हुआ बैंक का कि अब देखिए बैंक जो है वो सिर्फ एक चीज नहीं कर रहा, वो रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे रहे हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग भी है उसमें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी. मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं. जो भी सेवर जिस तरह का भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है वो बैंक जाता है, वो बताता है अपनी प्रियोरिटीज को और उसके बाद बैंक उस सब चीजों को देख के एनालिसिस करके उसको वो इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो बना देते हैं जो वो उसकी मर्जी होती है कि वो उसको अवेल करे या ना करे. सो दैट ऑल फ्रॉम आवर ग्रुप. आई होप यू ऑल गेन नॉलेज फ्रॉम आवर प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ये आ गया, एक मिनट अब्दुल्ला आ गया. मैम मुझे होस्ट बना दे, मैं स्क्रीन शेयर कर. बन गया यार, शेयर कर, स्क्रीन शेयर कर. Hello, assalamu alaikum. My name is Eljan
I am here along with my group members and Abasid and Riyaz and Moiz. So, topic of presentation topic is monetary policy. So, first of all, I start with monetary policy. Monetary policy refers to the use of instruments under the control of central banks for and use of money and credit. According to monetary policy, defined as a policy on central bank's control of the supply of money as an instrument for achieving the objective of general economic policy. आपकी आवाज So, सही नहीं आ रही। hello, how are you? डिस्टॉर्शन हो रही है। There was work signal, yes, I know. So I more explain monetary policy. Monetary policy is a set of actions to control nations' overall money supply and achieve economic growth. Monetary policy strategies include many banking strategies, that is reversing interest rates and changing bank reserve requirement, etc. Moreover, monetary policy tell us about the money supply. क्या होती है कि हमारे पास में हमारे सप्लाई हो रही होती है, जितने भी होते हैं मनी होती है वो सप्लाई होती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, ये सारा हमारे पास किसी भी कंट्री का मनी मॉनेटरी पॉलिसी बताती है। और मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या कौन कंट्रोल करता है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, जिस तरह नेशनल बैंक है पाकिस्तान में वो कंट्रोल कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह और भी कंट्री के अपने बैंक होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करते हैं। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीचे नेक्स्ट स्लाइड करना। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करता है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट जितनी भी होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी से या किसी भी कंट्री से खत्म होगी तो वहाँ पे सब जो है वो सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, फुली एम्प्लॉयमेंट वो नेशन बन जाएगी। सेकंड है हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है कि वो कंट्रोल करता है कि करेंसी कहाँ चल रही है, कितनी करेंसी वो चेंज होगी, डॉलर कितने सर्कुलेट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, ये सारी चीज़ें। उससे क्या होता है, फिर प्राइस स्टेबिलिटी आती है। करेंसी जो होती है वो प्रॉपर मतलब स्टेबल हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी भी, हमें पता है हमारे किसी भी कंट्री में अगर उसकी करेंसी स्टेबल होगी तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिकली वो कंट्री पहले स्टेबल हो जाएगा, और फिर स्टेबल होने के बाद अगर वो ये इन्हीं पॉलिसीज पे वो करेगा, आगे इन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेगा तो इकोनॉमिकली वो कंट्री ग्रो भी करेगी। तो लास्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि लोन दिया और कैसे रिटर्न करना है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है सारी। इसके बाद वो आगे याद करेंगे। देन से नेक्स्ट स्लाइड आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बस Bismillahirrahmanirrahim. I'm Riyaz here. Today I am presenting the topic of monetary policy, instrument of monetary policy. The first one is bank rate. The bank rate, two different types: central bank rate और दूसरा saving bank account rate. Basically, it's worth nothing. The specific bank rates vary country and they may change over time response to economic conditions and monetary policy decisions. To obtain the most accurate information on bank rates, it is recommended to check with local banks or financial institution or refers to website of your country's central bank. The next one is cash reserve ratio. Cash reserve ratio policy tool used to bank to regulate the amount of cash the commercial bank must keep the reserve with the central bank. The next step, primary purpose of is to CCR is to control the liquidity is banking system and ensure the stability of the financial system by adjusting the CCR center influence the amount of available lending by commercial banks. The next step is statutory liquidity ratio.
treasury liquidity ratio by as with the financial regulation, it is advisable to refer the official source of the relevant central bank or consultant expert for the most accurate and up-to-date information reading SLR in a specific country. The next one is REPO rate and reserve REPO rate. The REPO rate, known as the repurchase rate, is the interest rate which country's central bank lends money commercial banks. It's an important tool used to the central bank's regulatory liquidity the banking system influence borrowing cost in the economy. Reserve repo rate. The reserve repo rate is the opposite of the repo rate, is the interest rate which the central bank borrows from commercial banks and accepting their surplus funds and providing them the government securities. Other words, is the rate at which the central banks absorb liquidity from the banking system. The next step is open market operation. The open market operation are considered flexible and precise tools for implementing monetary policy because they can adjust it quickly, various amount central banks open market operation. Other tools like interest, the rate adjustment, reserve requirements, and forward guidance to achieve their policy objectives such as controlling inflation. It's more important to note the specific inflation strategies. The open market operations may vary across different central banks and countries. That's all for my side. The next is Zain Abbas. Assalamu alaikum. My name is Zain Abbas. I'm audible to you? जी जी अच्छा, मेरा टॉपिक जो है फिस्कल पॉलिसी है। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली आसान अल्फाजों में बताया जाए तो वो होता है कि एक गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा वो स्पेंड करे। ठीक है, इसको एक और वर्ड भी कहा जाता है बजट। सिर्फ पाकिस्तान का बजट हर साल बाद निकलता है, अभी 9 जून को बजट निकला, आप सबको पता हो। तो इसमें ये डिसाइड करते हैं कि हम किस किस जगह पैसा लगाएंगे और किस किस जगह पैसा नहीं लगाएंगे और कहाँ कहाँ से हम पैसा कलेक्ट करें। ठीक है, इसमें बेसिकली दो तरह के फिस्कल पॉलिसी के दो तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक होती है एक्सपेंशनरी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में ये होता है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी स्पेंडिंग रिड्यूस कर देती है और टैक्स को बढ़ा देती है। इस तरह होता क्या है कि जब मार्केट में पैसे की तादाद जो होती है वो कम होती है, ये बेसिकली क्या इससे जाता है ताकि ना जब आपकी महंगाई हो जाए तो आपके इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया जाए। तो होता ये है कि जब आप स्पेंडिंग भी कम कर देते हो और टैक्स भी बढ़ा देते हो तो लोग जो हैं वो चीज़ों को के ऊपर पैसा लगाना कम कर देते हैं, ज़्यादातर सेव करना शुरू कर देते हैं। तो जब पैसा जो है वो आपके पास होगा और आप स्पेंड नहीं करोगे तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो आपकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, तो जब प्राइसेस कम होंगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो जब आपने इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करनी है तो आप लगाते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, और जब एक्सपेंशनरी करना हो तो इसका वाइस वर्सा करते हो आप। वाइस वर्सा होता किस तरह है कि जो गवर्नमेंट होती है वो स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है अपनी और जो टैक्स है वो कम कर देती है। इस तरह होता है कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है तो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और ये मोस्टली इसलिए होता है कि ताकि जो इंडस्ट्री है वो अगर नीचे जा रही है, डाउनफॉल की तरफ जा रही है, तो उसको ज़रा अपॉर्चुनिटी मिले, वो फुल स्पेंडिंग करे और अपने बिजनेस को नरिश करे। इसके ऑब्जेक्टिव मेन ये लिखे हुए हैं 4-5 जो कि टू अचीव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ताकि हर बंदे के पास ज़रा एक अपॉर्चुनिटी आए टू गेन वेल्थ और वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा बना सके। टू इंक्रीज सेविंग जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में आप सेविंग इंक्रीज करते हो। डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन में आपकी कंट्रोल में हो जाती है। और पाकिस्तान में हमेशा हम ट्राई करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाने में, लेकिन हर साल हम फेल ही होते हैं। और फिर आता है टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर हम वही कोशिश करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी लगाने के लिए। सर अभी भी हमने इस साल के बजट में भी लगाई है, लेकिन हमारा निज़ाम ऐसे कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। फिर आती है प्राइस स्टेबिलिटी भी आ जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आती है तो उसमें लोग अपने ज़रा अखराजात कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी आते हैं। ये चार और ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उसमें यूज होते हैं। और एक्सक्यूज मी अब्दुल्ला, ये मोइज़ अमजद की है। ये मेरे
मेरे पॉइंट्स। अच्छा ठीक है। ये जो अच्छा नेक्स्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये आपको मोइनुद्दीन बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, मेरा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी का। सो फर्स्ट वन इसका आया था आपका डिफिसिट पॉलिसी। बेसिकली डिफिसिट पॉलिसी होती वो है जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी रेवेन्यू से ज़्यादा जो एक अमाउंट होती है वो जिस टाइम स्पेंड करती है या लगाती है, तो हमारी होती है डिफिसिट पॉलिसी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा नहीं जितना हम लोग अपने अखराजात के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये होता है आपका डिफिसिट पॉलिसी। सेकेंडली आती है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर ये होता है कि जिस टाइम आप क्या कहते हैं आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट होती है, आप किसी से बोरो करते हो, ठीक है, और आप उसको सारे को यूटिलाइज करते हो आप अपनी सोशल वेलफेयर के लिए या फिर पेंशन वगैरह होगी आपकी, ये मतलब लोगों के काम के लिए आप उसको यूज करते हो, तो ये आपकी होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर। थर्ड आई थी आपकी टैक्सेशन पॉलिसी। इसके अंदर आती हैं दो किस्म की टैक्सेशन होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है डायरेक्ट और सेकंड होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है ये वाली कि जिसके अंदर आपके ये सीन होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, उसके लिए मुझे गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब इसके लिए डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन होगा, उसने अपनी उस कंपनी के लिए अपनी एक फर्म के लिए उसको उसको टैक्स देना होगा, ठीक है। सेकेंडली आ जाती है उसकी इंटरेक्ट। इंटरेक्ट के अंदर ये होता है कि जिस तरह हम लोग क्या कहते हैं ना, अनइंटेंशनली हमें देना पड़ता है अनइंटेंशनली। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ खरीदते हैं, बिस्किट वगैरह, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे होते हैं, वो हम जानबूझ कर नहीं देते, लेकिन वो है कि जो बेसिकली वो होता है उस बंदे के लिए जो उस चीज़ को खरीदता है, मतलब आपका हो गया, आपका दुकानदार जो हो गया, बेसिकली उसके लिए होते हैं टैक्स। लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी अमाउंट जो है अपनी क्या प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो हमसे उस चीज़ को ले लेता है। आपकी लास्ट पे आती है जी पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट ये होता है आपका कि जिस टाइम आप आपकी गवर्नमेंट होगी, आप जब भी आप मतलब कि आप क्राइस के अंदर जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपनी जो आपका एक रेवेन्यू होता है या आपकी जो एक हम उसको फॉर एग्जांपल कह सकते हैं आपकी अमाउंट जो होती है या आपकी मैनेजमेंट अमाउंट होती है, उसको आप क्या कहते हैं ना एक जगह पे स्टिल रखने के लिए क्या करते हो, आप उसको कभी लोगों से कहते हैं लोन बोरो कर लेते हो, कभी किसी लोकल गवर्नमेंट से कर लेते हो, या कभी कभी कभार आप आईएमएफ के पास चले जाते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही है सारी चीजें। तो उम्मीद करते हैं समझ आए होंगे आपको। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आ रही है आपकी आवाज़? स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन। ओके, मैं शेयर करता हूँ। जी मेरी स्क्रीन शेयर हुई है आयशा? नहीं नहीं शेयर हो रही। आयशा अगर आप डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, या मुझसे शेयर नहीं हो रही, काइंडली। या मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। अगर आप शेयर कर दे तो मैं प्रेजेंट कर दूँ। आप मुझे भेजें, मैं शेयर करती हूँ।
खान स्टार्ट जलवा लगाना चाहिए मोर को जानते खिलाफ में काबा स्टार्ट करूंगा बस यो मिनट से बोल starting with the great name of Almighty Allah, the most gracious and beneficent. Good afternoon. It's glad to hear you are present here. Thank you all for coming. I would like to address about IPO. So IPO एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो एब्रीविएशन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक्चुअली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती क्या है, इसको थोड़ा हाईलाइट में कर दे तो इसकी डेफिनेशन को, वो कंपनी जो फर्स्ट टाइम या पहली दफ़ा मार्केट में या स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट करती है उसको आईपीओ कहते हैं। अच्छा, अब इसका जो इट्स अदर नेम इज अनसीजन्ड न्यू इशू। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आईपीओ पब्लिकली क्यों ऑफर करती है, हालांकि ये प्राइवेट कंपनी है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब उसको लग रहा है कि हमारी जो हमारी कंपनी है वो इन फ्यूचर मतलब प्रॉफिट गेन करेगी, देन वो अपने, या एक और रीज़न इसकी ये है, अपने जो वो लॉस है लाइक उसका जो नुकसान है वो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए वो अपने शेयर लिस्ट करती है। अच्छा, एक और इसके हवाले से क्वेश्चन है कि कंपनी ये क्यों करती है, इसका एक और आंसर है। और ये शेयर जो है पब्लिकली क्यों अनाउंस करती है, ये लोन क्यों नहीं लेती या किसी और से पैसे रिलेटिव से। तो इसमें देखें 2-3 ऑप्शन आते हैं। इसको अगर इसने अमाउंट लेनी है किसी से तो उसमें एक तो बैंक लोन्स आ जाता है, ये बैंक से भी लोन ले लेती है। रिलेशन कोई इसका रिलेटिव है उससे भी ले सकती है, या कोई मींस किसी से कोई और एंटिटी है उससे शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले। नहीं, इसका ये है कि इनको ये थोड़ा खदशा होता है, ये रिस्क होता है कि हम रिटर्न कैसे करेंगे। सो इन्होंने ये डिसीजन इस वजह से लिया होता है कि हम पब्लिकली लिस्ट शेयर करें, स्टॉक के ये जो शेयर है पब्लिकली ऑफर करें। उसका रीज़न में ये आता है कि इनका जो है रिस्क जो है कम हो जाता है। अगर नुकसान होता है ओवरऑल एक ओनर होता है, ये 2-3 मतलब ओनर होते हैं शेयर होल्डर, तो उसको जब ये एक्सटेंड करते हैं बढ़ाते हैं तो इनका रिस्क मिनिमाइज होता है और शेयर्स एक्सटेंड होते हैं। अच्छा, अब ये ज़रा आगे आप करें स्लाइड्स। हाँ जी, ये इसका एडवांटेजेस भी आ जाता है और वो ये रीज़न भी आती है कि क्यों पब्लिकली जाती है। तो ये जो 3 हेडिंग्स है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो इसका ये एज है, इसको ये बेनिफिट है कि कंपनी जब शेयर्स लिस्ट करती है तो ज़ाहिर है उसके पास 2-3 उसकी स्ट्रेटजीज होती है, 2-3 प्लानिंग होती है, तब वो जाके करती है। एक में आ जाता है कि वो कैपिटल राइज करे, लाइक उसने अपने ऑफिसेज खोलने हैं, ब्रांचेस एक्सटेंड करनी है अदर सिटीज़ में, तो एक कैपिटल एक्सटेंड कर लिया, उससे उसका बिजनेस भी ग्रूम करता है, देन बिजनेस भी एक्सटेंड हो जाता है और कैपिटल आ जाता है, मनी आता है। इसके अलावा सेकंड आ जाता है फ्यूचर कैपिटल। अब ये जो लिखा है वंस कैपिटल फर्म्स हैव ग्रेटर एंड इजियर एक्सेस टू कैपिटल इन द फ्यूचर। हाँ, अब ये एक लॉन्ग टर्म आ जाती है। लॉन्ग टर्मिनोलॉजी ये आ जाती है कि एक तो ये आपको बताया कि न्यू कैपिटल अराइज होता है, एक्सपेंड होता है। अब इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है फ्यूचर में, इसको कैपिटल एक मतलब फ्यूचर प्लानिंग में इसको ये लग रहा होता है कि अगर मैं इस तरह के शेयर लिस्ट करता हूँ देन फ्यूचर कैपिटल मेरे लिए राइज होगा। थर्डली मर्जर्स एंड एक्विजिशन में ये आता है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट एंटिटीज से ये लिंक्ड होते हैं और उनसे ये अवेयर करते हैं अपनी आईपीओ के बारे में।
कि हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं और उसका बेनिफिट क्या है। जी प्लीज 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 आगे करें। हाँ जी, अब देखें एडवांटेजेस भी जहाँ आते हैं वहाँ तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो जैसे कि एडवांटेजेस तो मैंने आपको आगाह कर दिए, अब डिसएडवांटेजेस क्या है देखें। सबसे पहला जो है डिसएडवांटेजेस का है एक्सपेंसिव। हाउ दिस इज एक्सपेंसिव? सो एक्सपेंसिव ऐसे है, देखिए आपको एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है, उसके लिए कॉस्ट लगती है, फिजिकली टाइम देना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। और एक्सपेंसिव ये है कि आपका सारे एक्सपेंसेस आते हैं, पैसे आते हैं। फिजिकली आप जब मीटअप किसी की करते हैं, एक मीटिंग अरेंज करते हैं, उसमें जो जो भी एक्सपेंस आते हैं, सो ये डिसएडवांटेज इसका पहला है। अच्छा, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Public companies must continuously file reports with the SEC and stock exchange they list on. Actually, इसमें यह है कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं ज़्यादा होती हैं। लाइक जो एक ओनर होता है या कुछ मैनेजमेंट लेवल होती है, जो टीम उस कंपनी को लेके चल रहे होते हैं, तो उन पे एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जब स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर ज़्यादा हों तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा फिर ये है कि वो जो एक क्योर वर्किंग होती है, जो एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, वो भी कम हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो ये इनको डिसएडवांटेजेस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सिंसियर है, कोई मतलब फुली सिंसियरिटी काम नहीं कर रहा, फुली टाइम नहीं दे रहा, मतलब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा ना, तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड क्या है? लॉस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, लॉस ऑफ कंट्रोल में देखें, अब मीन्स सपोज करें मेरी एक कंपनी है, अब मैं उसका ओनर हूँ, मीन्स फुल ऑफ अथॉरिटी, सारा कंट्रोल होल्ड मेरे पास है। अब जब मैं ऑफर करता हूँ डिफरेंट एंटिटीज को, वो शेयर्स लेते हैं, ज़ाहिर है उनका भी तो परसेंटेज आता है एक ओनरशिप में, तो फिर जो है कंट्रोल एक मेरा कम हो जाएगा। क्यों? वो ऐसे कि अब मैंने जब शेयर उनको लॉन्च किए, शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए, उस वजह से उनकी तरफ भी ओनरशिप बढ़ गई, कुछ परसेंटेज आ जाती है। वो शेयर पे डिपेंड करते हैं कितनी परसेंटेज पे उन्होंने शेयर्स लिए हैं। सो एक ये है कि कंट्रोल आपके पास कम हो जाता है। प्लीज आगे करिए। अच्छा, अब ये आईपीओ करने के लिए अच्छा टाइम, गुड टाइम है कि नहीं है? अब देखें, इसके पहली बात तो ये है, कोई प्रॉपर या स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इस टाइम या इस मंथ में, इस क्वार्टर में हमने आईपीओ लॉन्च करनी है या ऑफर करना है। सो इसमें किसी वक्त भी मतलब किसी को भी एक ऑफर होती है कि जब हम अनाउंस करने लगते हैं तो किसी भी एंटिटी, किसी टाइप भी एंटिटी हो, वो शेयर परचेज कर सकता है, शेयर ले सकता है। तो यही इसका बता रहे हैं, कुछ कंडीशंस, कोई रिक्वायरमेंट्स हमें वो देखनी पड़ती है। लाइक स्टॉक मार्केट कंडीशन होती है, इंडस्ट्री मार्केट कंडीशन, उसके बिहाफ पे, उसके पर्सपेक्टिव पे हम जो है अपना आईपीओ ऑफर करते हैं, लॉन्च करते हैं। सो दिस इज फॉर ऑल माय साइड। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। Thank you so much your attention. Any questions? So you can tell me. तो मैं आपको बता दूँ उसका। जब मुझे होस्ट बना दे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। आप शेयर करें, आप होस्ट हैं। शेयर हो गया? जी हो गया। My name is Shakrullah. My topic is method of hedging. अच्छा, इसका तकरीबन सिक्स मेथड्स हैं। इसमें फर्स्ट नंबर जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि मार्केट डिसाइड कर लेते फ्यूचर में, चाहे मार्केट डाउन हो या अप हो, ये डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल फिक्स नहीं होता है, जिस पे चलता है फ्यूचर, फॉर एग्जांपल बढ़ गया तो वही रहेगा, कम हो गया तो वही रहेगा फ्यूचर में। तो और दूसरा उसमें आता है स्वैप। स्वैप का मतलब यही है कि वो जो करेंसी है या
कोई कमोडिटीज या जो भी है, इसका वैल्यू वो चेंज होता है उसी टाइम पे। फॉर एग्जांपल डॉलर पीकेआर में चेंज करना तो उसी करंट टाइम में जो स्वैपिंग होता है ना, उसी टाइम ही चेंज हो जाएगा। जो डॉलर का कीमत है पीकेआर के साथ वही स्वैप हो जाएगा। और तो तीसरा है ऑप्शन। ऑप्शन में होता है हमारे साथ कॉल और पुट ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन में फर्क ये है कि उसमें हमें प्रीमियम देना पड़ता है और इसमें एक्सपायरी डेट होता है, और फ्यूचर में यही नहीं होता है। तो ऑप्शन में कॉल और पुट ऑप्शन होता है, चाहे मार्केट डाउन साइड हो तो उसके लिए वो पुट का ऑप्शन यूज होता है, और जब मार्केट अप साइड पे चला जाता है तो उसको कॉल ऑप्शन। एक्चुअली इसमें प्रीमियम देना पड़ता है, उस प्रीमियम वो डिसाइड कर लेते हैं, चाहे कमोडिटीज है, करेंसी है, स्टॉक्स है, जो भी है उसको डिसाइड कर लेते हैं, प्रीमियम देना पड़ता है। और उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, इस पे एक्सपायर होता है, अगर उसी टाइम पे एक्सपायर हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। और चौथा जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि ये फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ ट्रेड कर लेते हैं तो उसके साथ डॉलर का रेट वो फिक्स कर लेते हैं, तो इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, एक्चुअली ये पोर्टफोलियो होता है। फॉर एग्जांपल आपने वो 2 या 2 से ज्यादा शेयर्स लिए है ना, और उसको मैनेज कर रहा है, मतलब अगर आपने एक चीज में इन्वेस्ट कर लिया तो आपको वो हाई रिस्क हो जाएगा। अगर आपने 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा कर दिया तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। और 6 जो है ना न्यूट्रल हेजिंग है। अच्छा, इसमें जो सिंपल हेजिंग कर लेते हैं वो मार्केट में, फॉर एग्जांपल डाउन साइड को या अप साइड को दो ट्रेड ओपन कर लेते हैं। इसमें एक्चुअली होता है ना, हेज होता है। अगर एक वो लॉस में क्लोज होगा तो दूसरा प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा, तो दूसरी साइड से वो ट्रेड होता है, एक का टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा और दूसरा का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वैसे दैट इज माय साइड। ओके, थैंक यू।